belong from a small town Harda, which is in Madhya Pradesh. I have done my 10th and 12th from New Age Public School, Gatawada, and I have a 8.0 CGPA in 10th and 80.6 percentage in 12th. Then I have done civil engineering from Pruva Institute of Technology, Bhopal, with 7.44 CGPA. Then I have done my MTech in environmental engineering from NIT Kurukshetra with 9.41 CGPA. In my MTech, I have worked on a thesis named that is effect of COVID-19 pandemic on urban air quality in India. And I also have a GATE score of 691 in GATE 2022 civil engineering. And apart from my studies, I play badminton and guitar. Thank you. Okay. And today you want Snap for geotechnical engineering, right? Yes, sir. And you have interview for which organization? Sir, I have an interview for IOCL. ISU. And your interview date? My interview date is 19th of September. Okay. Okay. So, Raghavendra, can you tell me about the liquid limit, plastic limit? Yes, sir. So liquid limit is basically these limits are basically the quantity of water or water content for for liquid limit. After liquid limit, our soil behaves like a liquid, and in after plastic limit, our the soil behaves like plastic up till liquid limit. Okay. And what is the significance? Why we are calculating the liquid limit and plastic limit of the soil? Sir, these are the important parameters. Not I don't remember exact reason, but it is required for the classification of soil or the properties of soil, so that we can predict the quality of soil, like Okay. consistency index, then flow index type. What type of quality of soil you are deciding with the help of liquid limit and plastic limit values? Sir, their plastic characteristic we can define by that. Our plastic is sensitive or not, or our is less plastic or more plastic. Is Like it how much possible? Yes, Raghavendra, is it possible the liquid limit of a soil is more than 100%? liquid limit is more than 100%. Yes, sir, possible. Okay, any example? Sir, for clay, it might be more than 100%. Okay. So, can you name some clay minerals that we have? Sir, clay minerals, we have keolite, montmorillonite, and elite. And which one is most suitable? Sir, most suitable is keolite because it has hydrogen on in it, and it is more strong, hardest. Now, suppose we have this black cotton soil, Yes. and in which the presence of montmorillonite clay mineral, and we have to stabilize that soil. How can you stabilize the black cotton soil? Sir, if we have to stabilize the black cotton soil, we can do some stabilizing technique, like our lime stabilizing you can use, or cement stabilization, or we can provide grid sheet or something like that. Are you sure? So we can proceed with the cement stabilization. Suppose if we have this black cotton soil. No, I'm not that sure, but yeah, it can be a option. Okay, fine. Now suppose we have to mark or we have to place a foundation. So it is kind of the deep foundation that we have. So what type of deep foundation you will prefer as the soil is black cotton soil? That is an expensive soil that we have. Yes, sir. Sir, for that we use under ream piles. Under rim Under, piles. yes, sir. And how it different from your normal piles? Sir, they have a bulge on it or bulb on it, which registers the structure to go upward side. So it provides resistance to on both sides of not. Can you define this seepage pressure?
Yes, sir. Define. Sir, seepage pressure is basically the upward pressure of water from soil. We can say that. Upward pressure of the water. Is it Uh, always true the water apply the upward pressure? Is it in downward direction? Water is applying pressure on the soil solid in the downward direction. so downward direction is called pore water pressure, I think. Okay. So if you have to calculate the pore water pressure and seepage pressure, then how you will calculate? So pore water pressure is by simply putting uh, a barometer type, a pipette type. We can measure the level of water in it. Barometer. What is barometer, Raghavendra? Pressure measuring device. Okay. So little be specific. Barometer for liquid or gases? So barometer is for liquid. For gases, what we have? So for gases, we can use manometer or yes, sir. उल्टा बोल रहे हो राघवेंद्र. अच्छा. Manometers are for the liquids like this piezometers, U2 manometers, inverted U2 manometers, है ना. ये liquids के लिए. जैसे barometer एक हमारे पास ना ये atmospheric pressure को measure करने का instrument होता है. Yes, sir. barometer, है ना. ठीक है. तो पोर वाटर प्रेशर और सीपेज प्रेशर दोनों में क्या डिफरेंस है? Pore water pressure and seepage pressure. नहीं, sir. Okay, So, why we need to study this seepage analysis? What is the pressure that water is applying on the soil solid? How the movement of water is taking place? So kind of permeability, what is that is the basically engineering property of the soil. Why we are studying these things? sir, first of all, sir, like the structure which are directly related to water, like our dams and reservoirs, then this study is very much important. So we need to study the seepage pressure. Why we need? ठीक है. Sir, डैम yes, स्पिलवे के sir. केस Yes, sir. थोड़ा We से. can. Yes, sir. From that study, we can predict the total exit pressure so that our downstream side can be stabilized, and we also can predict the discharge of the seepage. Okay, you must heard about this quicksand condition. Yes, sir. So what is it? Sir, quicksand condition is generally occurred in the in the fine or medium sand. In that condition, our seepage pressure becomes equal to the uh, total exerted pressure from upward side due to their self weight. Hello. What you said, Raghavinder? Yes, sir. Can you repeat again what you said? Yes, sir. Sir, in quicksand condition is generally occur when seepage pressures becomes equal to the pressure exerted by the soil particles. Okay, what pressure soil particles are exerting? Sir, there are gravitational force only. Okay, so can you tell me what is the submerged unit weight of soil? Submerged. Unit weight of soil. Submerged unit weight of soil. Yes, sir. Sir, it is the difference of saturated weight of soil minus our pore water pressure. What is the unit of unit weight? Unit weight is kilonewton per meter cube. And pore water pressure? The same. Pore water pressure. What is the unit of pressure? For pressure, it is kilonewton per meter square, and for weight, it is Newton only. Okay, fine. So you must heard about liquefaction. Yes, sir. ये क्या होता है liquefaction? Sir, it occur in
soil particles of size of fine or medium sand, and in that they नहीं they behave राघवेंद्र, ये like क्या होता they है behave ये they किस में behave अटकर कर रहा like है, दैट इज फाइन. yeah, they behaves like liquid, liquid or muddy type, in which we can't build any structure, because this is तो this is due to earthquake or any. These are because of loose sand, I think. ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सॉइल के ऊपर आप कोई भी लोड अप्लाई करोगे, सॉइल वो लोड को बियर नहीं कर पाएगी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? Sir, no, sir, no proper reason, right? अच्छा, I'm not क्विक able to. सैंड कंडीशन और लिक्विफेक्शन में कोई सिमिलरिटी है या ये अलग अलग है? The quick sand condition is due to seepage pressure, and but liquefaction is a natural phenomena, I think, due to some vibration or. Okay. You said this submerged unit weight, so let me correct you. This is gamma sat, that is saturated unit weight minus unit weight of water minus gamma W. Yes, sir. Fine. Why this unit weight of water is being subtracted from the saturated unit weight of soil? Sir, because there is a upward pressure, is we are subtracting that. Okay. Which one pressure? Sir, this is pore water pressure. We are subtracting that only. In general way, in general sense, if we are talking about the soil below the groundwater table, so what Yes, do you sir. think? It will be saturated or it will be submerged? Sir, it will be saturated only. Why not If submerged? uh, sir, below groundwater table, it will be submerged, but above few meters, it will be saturated due to capillary. Okay, fine. My question is that when we are going to write this submerged unit weight of soil, we are just writing gamma sat minus gamma W. Why this subtraction of unit weight of water? As we are Sir, just talking about the below the groundwater table, there is a no seepage at all. sir, it is due to buoyancy pressure, which water applies on the soil particle, so which or further decrease its unit weight. We have the floating bodies, and Yes. stability of floating bodies are decided on what basis? Sir, floating bodies are defined on the first thing is specific gravity. If a specific gravity of floating body is less than the fluid or where it is floating, so then it will float. And secondly, we have to increase its surface area so that its pressure can be uh, equally discharged. Okay, so try to understand the question, Ragvinder. If we are talking about the floating bodies, we have ships. So how Yes, can we decide their stability? sir. On There what is stability. parameters? So their stability uh, can be decided on the phenomena of meta center. Hmm. If if meta center is above the center of gravity of body, then it will float. Okay, fine, fine, fine. So my last question to you, Ragvinder. You must heard about this plate load test. Yes, sir. So what is the purpose of conducting the plate load test? The plate load test basically done for the to know the ultimate settlement if we apply load on it, and also bearing capacity of soil. Okay, इसका practical use बताओ. The practical use plate load test is also used in the to know the character of subgrade soil in our highways, and also for building to know the ultimate settlement. Like we we do plate load test to know the settlement, and we then directly tell the settlement of our building after implementation of load. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करें कि हम प्लेट लोड टेस्ट का यूज कर रहे हैं सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए, सो मेरा Hmm. पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि एट व्हाट लेवल यू विल पुट द प्लेट फॉर कंडक्टिंग दिस प्लेट लोड टेस्ट? Sir, the plate will be placed on the level of our foundation.
ओके, नाउ अगर हमें सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी का पता नहीं है, वो निकालने के लिए अगर हम प्लेट लो टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो हाउ कैन वी डिसाइड कि हमें फुटिंग इस लेवल पे रखना है, क्योंकि हमें तो सॉइल का बीरिंग कैपेसिटी पता ही नहीं है। अगर फुटिंग का लेवल पता नहीं होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लेट को किस लेवल पे रखना है? Sir, first of all, we can just, uh, sir, we can just put it on the minimum level, or which is uh, which is defined by RS. ठीक है, सो राघवेंद्र Sir, मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। यस, yes. सो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट मैंने आपसे पूछा, ठीक है, आपने जो इनका आंसर किया, दीज आर काइंड ऑफ द बाउंड्री वाटर कंटेंट दैट वी हैव। तो अगर मान लो आपसे इसका सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है कि इनका यूजेस क्या है, तो Yes, आप sir. बोलोगे सर हम पीआई वैल्यू जो निकालते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो हम निकालते हैं, जितना हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्ले कंटेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लास्टिसिटी वैल्यू हाई होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर डिफाइनिंग द फर्दर क्लासिफाइंग द सॉइल, वी हैव द लेस प्लास्टिक सॉइल, we have the more plastic soil, kind of the non-plastic soil, that is when PI value is 0. So on the basis of PI, sir, so we have to calculate the liquid limit and plastic limit. Or in short, liquid limit may be greater than 100%. But I ask you, the Yes. simple example you can give with the bentonite clay slurry. Its liquid limit is more than 500%. And bentonite clay slurry is used for the stabilization of the bore holes that we are doing in the pilings. So where? पाइलिंग वर्क आपने देखा होगा, जब पाइलिंग वर्क होता है ना, तो उसमें हम व्हाइट सा सब्सटेंस भेजते हैं अंदर, ठीक है। जब कंक्रीटिंग हो रहा होता है तो व्हाइट सा सब्सटेंस भी बाहर निकलता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है नीचे वो भी बाहर निकल रहा होता है। तो वो जो व्हाइट सा सब्सटेंस है वो बेंटोनाइट क्ले स्लरी होता है। जैसे सीमेंट के मान लो, या कोई हमारे पास व्हाइट सीमेंट है, उसके बैग है 25 kg का होता है, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। तो उसको हम बड़े से टैंक में घोल देते हैं, एजिटेट करेंगे अच्छे से, फिर हम इसका सप्लाई करते हैं पिट के अंदर। पिट में जितने भी वाइड्स होंगे, कैविटीज होंगे, सभी को क्लॉग कर देगा। जैसे पिट भर जाएगा तो ये बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो हम जो मटेरियल बाहर निकल रहा है बेंटोनेट क्ले स्लरी, तो पिट में जाने से पहले इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से चेक की जाती है। और जब ये मटेरियल बाहर निकल रहा होगा, सेम मटेरियल स्पेसिफिक ग्रेविटी का बाहर निकल रहा होगा, तो सेम हम इसको फिर से पिट अपने टैंक के अंदर इसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद हमें वो स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम मिलता है ना, ऐसा नहीं कि एकदम डाला वो सेम मिल गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बेंटोनेट क्ले स्लरी आप इसका आंसर दोगे। और अगर आपसे ये पूछेंगे कि अगर सॉइल में आपका ये माउंट मोरोनाइट क्ले मिनरल प्रेजेंट है, तो इससे आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको लॉस ही हो रहा है ना। उसमें कोई Yes, बेनिफिट sir. नहीं है कि बहुत ज्यादा श्रिंकेज और स्वेलिंग होगा वहां पे। लेकिन इस चीज का हमने एक जगह बहुत अच्छा यूज किया है। तो यू कैन से कि सर, जब हम पाइलिंग वर्क कर रहे होते हैं तो हम बेंटोनाइट क्ले स्लरी का एक घोल बनाते हैं, और जिसको हम क्या करते हैं, बोर होल को स्टेबलाइज करने में यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो ठीक ये है, एक्सपांड करती होगी तो उससे दिक्कत नहीं होती फिर बाद नहीं में? नहीं नहीं, हमें तो फायदा है ना उल्टा। अगर ये एक्सपैंड करेगी तो ये जो क्लॉक्स हैं, जो कैविटीज हैं, वो हाँ, फिल कर देगी उनको जाके। ठीक है। जैसे मान लो हमने वॉल में कोई होल किया है, और जैसे हम क्या करते हैं, वो प्लास्टिक वाला फिलर डालते हैं ना, और जैसे हम उसके अंदर कोई मान लो हाँ, बोल्ट डालेंगे, तो एंड से वो फैल जाएगा, फिर बाहर नहीं वो निकलता हाँ सर। है ना। और स्टेबलाइजेशन आप कैसे करोगे? तो ब्लैक कॉटन सॉइल का, दैट इज लाइम स्टेबलाइजेशन। बेसिकली आप बोलोगे सर हम लाइम स्टेबलाइजेशन करेंगे। सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन आप ऐसी सॉइल के लिए नहीं यूज करोगे जिसमें ब्लैक कॉटन प्रेजेंट हो, मतलब मॉन्ट मोरोनाइट प्रेजेंट इन शॉर्ट, हम्म ठीक है। तो डी पाइल, यस। सीपेज प्रेशर क्या है? सो आपने आंसर करना है कि सर, जब भी लिक्विड और स्पेशली वाटर फ्लो करेगा सॉइल मास में से, तो वाटर क्या करता है, जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इट विल अप्लाई अ प्रेशर। जिस भी डायरेक्शन है, इट मे बी इन वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकली हम्म अपवर्ड, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन में या किसी एंगल यस के सर। ऊपर, हमेशा वाटर उसी डायरेक्शन में सॉइल सॉलिड के ऊपर एक फोर्स लगाता है सर। उस फोर्स को या प्रेशर को हम बोलते हैं सीपेज प्रेशर। अगर मैं उसको हम्म फोर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, दैट फोर्स विल बी द सीपेज फोर्स। हम्म ओके। अब अगर मान लो सर हम हाइड्रोलिक डैम की कंडीशन की बात करें, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज डैम, तो उसके डाउनस्ट्रीम एंड पे क्या होता है, जब वाटर बाहर निकल रहा होता है, बिकॉज वी हैव द हियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो लाइंस भी हमारे पास होंगी जिनको हम स्ट्रीम लाइंस बोलते हैं, और इक्विपोटेंशियल लाइंस भी होती हैं, यस सर। ठीक है। तो जब वाटर बाहर निकल रहा होता है, तो सर वहां पे टेंडेंसी होता है कि सॉइल पार्टिकल भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जब अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है सीपेज प्रेशर, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर लग रहा है ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड, जिसे हम सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बोलते हैं, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे सर, तो सॉइल पार्टिकल यूनिट लेस हो जाएगा। और जिस भी डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा होता है, तो पार्टिकल भी बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म आता है इफेक्टिव स्ट्रेस। हम्म
इफेक्टिव स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि टोटल में से हम पोर वाटर प्रेशर को कम कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर पोर वाटर प्रेशर हमें मेजर करना है तो जस्ट वी आर इंसर्टिंग द पीजोमीटर्स। पीजोमीटर से वही वर्ड याद नहीं आ रहा। तो पीजोमीटर में जो भी हाइट ऑफ वाटर होगा ना, उससे हम वाटर के यूनिट वेट को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द पोर वाटर प्रेशर। और अगर हमें सीपेज प्रेशर निकला होगा तो यूनिट वेट ऑफ वाटर को, अब देखो अगर सॉइल मास के अंदर तो फ्लो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमेशा फ्लो विल पार्टिसिपेट फ्रॉम हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड, या यस। हाई टोटल एनर्जी टू लो टोटल एनर्जी। तो जो हेड फ्लो कॉज करवा रहा होगा दैट इज द सीपेज हेड, जब उस सीपेज हेड से आप यूनिट वेट ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई करोगे, वी विल गेट द सीपेज प्रेशर। बस इतना ही सही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। एक में आप यूनिट वेट ऑफ वाटर को पीजोमेट्रिक हेड से मल्टीप्लाई किए हो तो वो पोर वाटर प्रेशर बन जाएगा, और दूसरे में आप यूनिट वेट ऑफ वाटर को जैसे ही आपने सीपेज हेड या वो हेड जिसके कारण फ्लो पार्टिसिपेट हो रहा है, तो सीपेज प्रेशर पिक्चर में आता है। तो जनरली क्या होता है, ये जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होता है ना, टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये जो पोर वाटर प्रेशर होता है ना, अगर हम बात करें कि सीपेज भी होगा, तो सीपेज के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता भी और घटता भी है, इंक्रीज भी करेगा और यस सर। डिक्रीज भी करेगा। इट विल डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, किस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ। सीपेज हो रहा है। अगर सीपेज वर्टिकल डाउनवर्ड होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी वर्टिकल डाउनवर्ड, तो हमारा जो न्यू इफेक्टिव स्ट्रेस होता है या जो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो बढ़ जाता है, जिससे हमें फायदा ही होता है बीसी। लेकिन अगर हम डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो जहां से वाटर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में सीप कर रहा होगा, तो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो डाउनवर्ड में, और जो हमारा सीपेज प्रेशर है वो अपवर्ड में, तो नेट हमारा जो स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि आपका नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाए। जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस आपका जीरो होगा, सॉइल पार्टिकल वाटर के साथ मूव करना शुरू करेंगे, तो एक कैविटी, एक पाइप की फॉर्मेशन को कर देंगे, और ये पाइप आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डाउनस्ट्रीम एंड से स्टार्ट होगा और अपस्ट्रीम एंड की तरफ वो बढ़ता जाएगा। तो क्विक सैंड कंडीशन में भी यही होता है, जिसमें इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे जीरो हो जाता है, मतलब सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। रीजन इज दैट वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर में आपका इंक्रीमेंट होता है, शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। और सेम लिक्विफेक्शन की बात करें तो इसमें भी आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं वो जीरो हो जाएंगे, दैट इज सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाता है। दोनों में प्रिंसिपल सेम ही है, क्विक सैंड कंडीशन और लिक्विफेक्शन, दोनों में सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो रहा है, बिकॉज इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो रहा है। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों जीरो हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन द पोर वाटर प्रेशर। नाउ केयर शुड बी टेकन कि जब हम लिक्विफेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कोई डायनेमिक एक्टिविटी के कारण ये इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो रहा है, या अर्थक्वेक वाइब्रेशन के कारण भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है, जब वाटर बाहर निकल रहा होता है ना, तो वाटर जो प्रेशर लगाएगा, सीपेज प्रेशर हो सकता है वो ओल्ड इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर हो जाए, दैट इज नेट इफेक्टिव स्ट्रेस आपका जीरो हो जाए। और ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट निकालते हैं फ्लो नेट में, और उसको क्रिटिकल हाइड्रोलिक रीडिंग से हमेशा हम उसको कम रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मतलब इतना ही अंतर है क्विक अपना क्विक सैंड और इसमें लिक्विफेक्शन हाँ में, कि ये बिल्कुल। डायनेमिक के कारण है और वो अपना सीपेज प्रेशर के कारण है बस। हाँ वो ये डायनेमिक एक्शन के कारण होगा, जैसे अर्थक्वेक वाइब्रेशन हो गया है ना, और दोनों में अल्टीमेटली पोर वाटर प्रेशर आपका बढ़ रहा है, जिससे क्या हुआ, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है। और प्लेट लो टेस्ट से मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा जनरली कि प्लेट लो टेस्ट के बारे में आप बताओ किस लेवल पे कंडक्ट करोगे, तो आपको बोलना है कि सर मेजरली प्लेट लो टेस्ट से हम क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट चेक कर रहे हैं सॉइल का। और आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हो कि सर हाईवे में जो हम प्लेट लो टेस्ट करते हैं तो वो मॉडल्स ऑफ सबवे डायरेक्शन निकालने के लिए करते हैं। के वैल्यू हमें चाहिए होती है जब हम डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम बीयरिंग कैपेसिटी, अब मान लो आपने बोल दिया है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप बीयरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हो और आपको पता ही नहीं है किस लेवल पे आपको ये टेस्ट कंडक्ट करना है। तो आप बोलोगे सर जनरली हम क्या करते हैं, बोर होल टेस्ट डाटा पहले से ही बोर होल कंडक्ट किए जाते हैं, या एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ये सर टेस्ट कंडक्ट किए गए होंगे पहले से ही, और हमारे पास एक चार्ट आता है जिसमें सॉइल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। जियो टेक्निकल इंजीनियर विल प्रोवाइड अस डाटा कि ग्राउंड सरफेस से 1 मीटर नीचे, 2 मीटर नीचे, 3 मीटर नीचे, 4 मीटर नीचे, या अप टू 20 मीटर तक इस तरह का हमारे पास सॉइल स्ट्रेटिफिकेशन है। क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, सैंड प्लस ग्रेवल का मिक्सचर है, हार्ड स्ट्रेटा है, लाइक दैट। अब हम उस लेवल पे अगर प्लेट लो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें फाउंडेशन और फुटिंग को रखना है, तो प्लेट लो टेस्ट करने का सिर्फ इतना ही पर्पस है, क्या वाकई में इस लेवल के ऊपर हमें उतना बीयरिंग कैपेसिटी मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं राघवेंद्र। वी आर जस्ट चेकिंग द बीयरिंग कैपेसिटी इन हाईवेज, है। तो आपने कुछ इस तरह से जस्टिफाई करना है फिर हमसे, यस सर। ठीक है। तो बाकी ठीक है आपका, बस थोड़ा सा आपको ना चीजों के ऊपर हल्का सा फोकस करना है सॉइल में ना। अगर आप सर वो सॉइल थोड़ा अपना सा। दूसरा सब्जेक्ट बोल रहे हो तो थोड़ा सा आपको फोकस करना है, बिकॉज इन्वायरमेंट आपका सही है, बट आई आस्क यू अर्ली इन द मॉर्निंग, इन्वायरमेंट में कोई इशू नहीं है, बट आपको थोड़ा सॉइल में फोकस करना है।
ठीक है। अभी ठीक से पढ़ा भी नहीं था सर, और थोड़ा सा इंटरव्यू आज से दिया नहीं इस वाले क्वेश्चंस, और उसका आइडिया भी कम था। कुछ स्नैप पड़े हुए हैं मेरे ख्याल से, बहुत सारे स्नैप पड़े हुए हैं पैनल के ऊपर ना, सॉइल के एक बार यस गो थ्रू करो। यस सर। Anything else you want to ask, Raghavendra? Okay then, Raghavendra, all the best and keep preparing. थैंक यू सर।